hotels essay on Go Ibibo, full marks by Bebo. Great stay starting at rupees 14.99 on Go Ibibo. जय जगन्नाथ वेलकम टू CHSE ओडिया समस्त को आज क्लास को स्वागत हाउ आर यू ऑल केमती अच्छो समस्ते आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आमे थर्मोडायनामिक्स रो बहुत दिन तले क्लास पढुथिले लेट्स रीड द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनामिक्स आमे थर्मोडायनामिक्स रो चैप्टर टा पढि नबा वेट आई हैव टू और इस सेटअप टा टिके सानो कर देबा ना ओके सो आमे देखुथिले जे थर्मोडायनामिक्स माने तुम्हारा कोन इट इज द जनरली जोडी हमर थर्मो माने हीट माने डायनामिक्स माने मोशन ठीक अछि सो हियर वी वर डीलिंग विथ द चेंज ऑफ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट एनर्जी accompanying all the physical and chemical processes and the basic terms related to thermodynamics are system and surrounding सिस्टम एंड सराउंडिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम हम देखते टाइप्स ऑफ सिस्टम रे थिला तुमरा कोन ओपन सिस्टम जोडी बोथ हीट एंड मैटर एक्सचेंज हबो क्लोज सिस्टम ओनली हीट एक्सचेंज हबो मैटर नो आइसोलेटेड नेदर हीट नॉर मैटर इज एक्सचेंज्ड एटा थिला ओपन क्लोज्ड आइसोलेटेड होमोजेनियस सेम टाइम ऑफ सेम फेज रो हेटेरोजेनियस डिफरेंट फेज रो माइक्रोस्कोपिक जो गुडा लार्जर प्रॉपर्टी गुडा डील करिवो माइक्रोस्कोपिक स्मॉलर प्रॉपर्टी गुडा डील करथिवो स्टेट फंक्शन जो गुडा तुम्हारो पाथ फाइनल और इनिशियल ऊपर ही डिपेंड करथिवो पाथ फंक्शन पाथ ऊपर डिपेंड करथिवो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तुम्हारो कोन ना अदर ऊपर अदर वेरिएबल पर डिपेंड करथिवो टू बी एक्सप्रेस्ड आउट डिपेंडेंट वेरिएबल जो गुडा अदर ऊपर डिपेंड करनथिवो इंडिपेंडेंट वेरिएबल intensive independent upon amount of substance extensive dependent upon amount of substance isothermal carried out at constant temperature isobaric carried out at constant pressure isochoric carried out at constant volume adiabatic carried out at constant heat cyclic जोटे तुम इनिशियल पार्ट को पळे आसीबो रिवर्सिबल कोन होछि ना तुम जोटी बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम irreversible system and surrounding does not lie in equilibrium internal energy होछि तुम energy stored by virtue of which its chemical nature is known as internal energy total internal energy associated with the molecule can be represented as U is equal to कोन आछि तुमरा UR plus UV plus UT माने rotational energy vibrational translational electronic nuclear potential energy as it is a state function माने तुम्हारा फाइनल और इनिशियल ऊपर डिपेंड करे पाथ ऊपर फॉलो करे नहीं दैट्स व्हाई इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला दैट इज del U is equal to U2 minus U1 एवं फर्दर एक्सोथर्मिक पे इट इज नेगेटिव एंडो पे इट इज पॉजिटिव साइक्लिक पे इट इज जीरो एंथैल्पी होची तुम्हारा हीट रिमूव्ड और गिवन टू ए सिस्टम and it is equal to U plus PV or U is the internal energy so further as U as well as V as U is a state function that's why heat is also a state function depends upon the final and initial part exothermic by negative endothermic by positive cyclic by zero isochoric by internal is equal to del U enthalpy of a reaction is equal to the enthalpy of products minus enthalpy of reactants further enthalpy of a reaction involving ideal gas is P del V is equal to your del H is equal to del U plus P del V so del H is equal to del U plus del nRT and again we have done so many questions related to this then standard enthalpy of a reaction होची कोन जो enthalpy of a reaction measured at standard condition माने 273 Kelvin आउ तुम्हारा 1 bar pressure रे जोटा मेजर करा जिवो that is known as standard enthalpy of a reaction further enthalpy of phase transformation रे आसीबो कोन जोटी तुम्हारा phase change हुए
enthalpy of fusion, that is तुम्हारा heat solid 1 mole of solid तुम्हारा convert over liquid को, that is enthalpy of fusion. Enthalpy of evaporation, 1 mole of liquid will be changed into gas, is known as enthalpy of evaporation. Enthalpy of sublimation, solid will be converted into gas. Enthalpy of formation, 1 mole of the chemical substance will be formed, and enthalpy of combustion, 1 mole of the chemical substance undergoes combustion, that is reaction with oxygen. Bond dissociation enthalpy, that is bond dissociation energy or bond energy, that is enthalpy involved during the breakage of a chemical bond. Lattice energy is the amount of enthalpy or energy released when 1 mole of an ionic substance is formed from the corresponding gaseous ions. Then enthalpy of solution is known as when 1 mole of the solid substance is added with the specified volume of the solvent to make the solution, it is known as enthalpy of solution. Further, the heat enthalpy concerned when 1 mole liter inverse, that is 1 molar liquid is diluted with addition of excess of water. Heat capacity, which is the ability of a system to absorb or emit heat, is known as heat capacity. So Q is equal to C del T, or Q is directly proportional to T. So C is equal to Q by del T. What is C? Proportionality constant known as heat capacity. So heat capacity of a system is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 degree Celsius. Molar heat capacity of a system तुम्हारा already define कराई ना 1 mole of a substance को 1 degree Celsius रे raise करे को जा रही है. Further, C is directly proportional to M, so C is equal to MS. So Q is equal to MS delta theta, ताले S is equal to Q by M delta theta. When M is equal to 1 kg, delta is equal to 1 Kelvin, S is equal to Q. So specific heat of a system is defined as the amount of the heat or the enthalpy required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 degree Celsius. So कौन कहला हमें 1 kg substance को हमें 1 degree Celsius रे increase करिया पई जहाँ हीट तुम्हारा कौन करछे जहाँ हीट यूटिलाइज होची, that is known as specific heat. और Cp तुम्हारा constant pressure, it is equal to your Cp is equal to del S by del T. Again Cv होची constant volume rate, so del U is equal to Cp del T, or Cv is equal to del U by del T. Again relationship देखते ले Cp minus Cv is equal to R. So until here we had discussed ए जे हमारो थिला discussion of path, हमारो Cp Cv already ए part जे हमारो discussion ही सारथिला. ठीक है, आके रिलेट करिके हमें गोटे गोटे क्वेश्चन भी प्रॉब्लम भी सॉल्व करिबा. ओके, तापर हमरा आछि जे तुमरो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन. तो गिव हेडिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अगर जीरोथ लॉ नाही तथापि मु जीरोथ लॉ भी कह दिउछि. So heading 8 is the laws of thermodynamics. Laws of thermodynamics under हम देखिबा. First one is zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. So it equal when a body A is in equilibrium with body B, is in thermal equilibrium, not khali equilibrium, is in thermal equilibrium with body B, equilibrium with body B, तो बॉडी ए कहा सहित थर्मल इक्विलिब्रियम अच्छी बी सहित
एंड अगेन बॉडी बी का सहित थर्मल इक्विलिब्रियम अछि सी सहित माने एगुडा सब आइसोलेटेड सिस्टम रे जीवो अगेन B is in thermal equilibrium with body C thermal equilibrium with body C then both A and C are in thermal equilibrium कौन कहगला ध्यान देगी सुन ना जिते आमर ए बी सहित बी सी सहित रहुची ताले ए बी सी सहित थर्मल इक्विलिब्रियम रहिबो ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी ए का सहित थर्मल इक्विलिब्रियम रहिची बी सहित अगेन बी का सहित थर्मल इक्विलिब्रियम रहिची सी सहित ताले हमें कहि परिबा ए विथ सी सहित थर्मल इक्विलिब्रियम रहिची सो ए इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी बुझियला बुझियला ए जदि बी रे रहउची बी जदि सी रे रहउची ताले सी भी कोन रहउची ए सहित थर्मल इक्विलिब्रियम रहउची माने सी आउ ए भीतर हीट ट्रांसफर होउची क्लियर अबाउट दिस ना कार डाउट अछि सो आमे एडा एक्सप्लेनेशन हे गेला लॉ डाबे लिखिबा लॉ होची कोन दैट systems are in thermal equilibrium at a same temperature. So law is systems are in thermal equilibrium exist at the same temperature. Existing at the same temperature. So same temperature रे कौन हम सिस्टम गुड़ा का थर्मल इक्विलिब्रियम रही थी बो ओके नेक्स्ट इज application of zeroth law. Applications. So application रे जदि हम देखिबा फर्स्ट आछि zeroth law फर्स्ट एप्लीकेशन आछि तुम्हारो थर्मोमीटर फर्स्ट एप्लीकेशन होछि थर्मोमीटर सो थर्मोमीटर रे हमें कोन कर परिबा ना थर्मोमीटर रे हमें गोटे जनरली कौन हुए जेकोसी गोटे जिनस जो आमर हीट हुए थर्मोमीटर में कौन करूँ जेकोसी गोटे जगह टेम्परेचर मेजर करवा सपोज ये मु पानी गरम करते हीट हो जानवा गले मुझे कौन करूँ आगे थर्मोमीटर टच कराओ थर्मोमीटर गोटे मेटाल प्लेट थाए प्रथम तले ठीक अच्छे मेटालिक प्लेट थाए आलुमिनियम तापर ता भितर ताकू कनेक्ट हो कौन थाए मर्क्यूरी ताकू कनेक्ट होता है मर्क्यूरी ओके ता सहित कनेक्टेड था मर्क्यूरी आ मर्क्यूरीटा से ग्लास भितर उठा को लगे केमिति
ना जिते पानी गरम हुए जिते तुम पानी गरम हुए पानी सहित ए मेटालटा कौन हुए पानी सहित मेटालटा थर्माल इक्विलिब्रियम रुहे पुणी मेटालटा जिते थर्माल इक्विलिब्रियम आसे बा हीट एक्सचेंज हुए पुणी सी पारद को दिए मर्क्यूरी फर्दर हीट एक्सचेंज है मर्क्यूरी लेवल इंक्रीज हुए by this in this way we can measure by using zeroth law of thermodynamics we can measure the heat of any content clear so ame likhi pariba that as that sorry first one is temperature mercury sorry your thermometer is a good example of thermometer is a good example of zeroth law of thermodynamics केमती मुझे जमती कहली ना पर फर्दर किमती एटा ऑलरेडी मु बुझे देली किमती ना द मेटल देन योर mercury and the boiling surface and the observable surface boiling surface तो लिखवे नहीं observable surface all are lying in thermal equilibrium. All are lying in thermal equilibrium. तो सब गुड़ा कौन हो थर्माल इक्विलिब्रियम रे रहउची जद्वारा हमर एटा टेम्परेचर टा बढ़िले हमको पारद जना पड़ुची जे टेम्परेचर बढ़िला बोली की थर्माल इक्विलिब्रियम जदी नथांदा तमे मी चाहि की थांदो से कहउची कोन बढ़ुनी अरे बढ़ियो बोले केन देबो थर्माल इक्विलिब्रियम एरे से इन परा क्लियर एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन next the change in temperature of a system गोटे सिस्टम रा टेम्परेचर केते चेंज हैला is measured by means of zeroth law ठीक है सो जीरोथ लॉ रु आम कौन डिटरमाइन कर परिबा मेजर कर परिबा वी कैन डिटरमाइन द चेंज इन टेम्परेचर गोटे सिस्टम रो टेम्परेचर चेंज केते रहउची वी कैन डिटरमाइन इन दिस वे क्लियर और एनी डाउट कार किछि डाउट अछि डू यू हैव एनी डाउट्स आई थिंक यू माइट नॉट हैव एनी डाउट्स Yes, Sahil, you can use this thermometer for any, you can use for any surface or any body part, you can use anywhere. Thermodynamic ro use सबुटी कर परियो जोटी जोटी तुमको दरकार थिबो. So it is about zeroth law. Next जीवा में first law of thermodynamics. First law माने भाबुतिया जे एक नंबर ना first law होची second नंबर thermodynamics रो. Second law. First law of thermodynamics. First law कौन कहूची ना first law states that
between two systems, it says that between two systems the internal energy change between two systems the internal energy change is equal to the difference of heat transfer into the system and the work done by the system, not on the system, work done by the system, So mathematically हम यदि कहबा the internal energy is equal to the difference of heat transfer and the work done. So we can say here that del Q, this is your internal energy, del U is equal to Q minus del W, or you can say that U is equal to Q minus W. What is Q? Q means your total heat, and what is W? W means work done, or you can say that Q is equal to del U plus W, Q minus W, or Q plus W also. किसी की जगह Q plus रही Q minus W. Q plus जो रही work done on the system, Q minus जो रही by the system. सब बड़े मन रखो by the system होची तुम्हारा कौन? by the system होची system जोगु. So system जोगु सब बड़े minus रही ताले इटा plus रखी दवा. अब गोटे लिखिवा that for the work by the system, work by the system माने तुम्हारा इटा कौन हो? Expansion हो. को गोटे जिनस कौन हो? Expand हो को लगिवो. सही केस रे del work done टा कौन आसीबो? Negative. Work done टा negative आसी. अब for the work done inside the system, for the work done inside the system, it is compression. सेटा कौन कह जो compression. So here W is equal to positive. बुझिला पॉजिटिव केतेबेला बा ना जेतेबेले वर्क डन इनसाइड द सिस्टम बा हमें कोइ परिबा हमें वर्क डन ऑन द सिस्टम इनसाइड और ऑन द सिस्टम सिस्टम ऊपर तल काम करबा दा पॉजिटिव हो सिस्टम जेतेबेले निजे काम करबो सेटा हबो तुमरो नेगेटिव. So you can say that we can calculate the del U by this method, okay, and energy forms also heat energy by hame method re kari pariba. So in general we can say that so it can be stated again that the energy of the universe remains same. So universe energy सबले कौन रहे same रहे. The energy of the universe
ঠিক আছে, so you can say that del u is equal to q plus w, del u is equal to q plus w. Next class रे हम देखिबा application of first law of thermodynamics. Actually today I am little bit not feeling good, so हम next class रे देखिबा application of thermodynamics. आज रो class को एठी हम रखिबा, application of thermodynamics हम next class रे देखिबा. आज हम 0th law, first law आउ हमें नेक्स्ट क्लास रे देखिबा एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन. थैंक यू अगेन.